Okay, so to just give you a recap, this is the daily page of the almanac where you have the daily prediction. This is the diagram which we get in volume 1 for each and every standard port. A different diagram is used. This is the diagram for Antwerp. So two lines which you see here, the dotted line and the solid line. Dotted line represents the NAIPS range, that is 4.0 meters in this case. And the solid line represents the spring range, which is 5.5 meters in this particular port in this case. Then different items which are given in this diagram. You have the high water time in the middle, plus shows interval after high water, minus in the values shows interval before high water. Then you have a scale on top, that's the high water scale. You have a scale at the bottom, that's the low water scale. Mean curve is solid line, spring curve is solid line, and the NAIP curve is the dotted line. Then we did this particular question, beta. This was the question which we did last time. Height of tide at Antwerp at 0630 hours on 2nd January 1992. So what we did was we first went into the geographical index, found out the page number where this port is. So that is page number 182. Then we went to this 182 page number. From there we obtained 2nd January 1992, the times as well as the heights. And using these heights, we calculated the duration of tide, that came to 6 hours 42 minutes, and the range of range of tides, that is 4.3 meters, high water minus low water. Then for the time which is required, that is 0630 hours, we calculated the interval. Interval came to 5 hours 11 minutes after high water. So first we drew the interpolation line. At the bottom you see the low water height in meters, that is 0.8 meters. At the top you see the high water height, which is 5.1 meters. We joined them together to get this green line. Then 5 hours 11 minutes after high water. So you see we went to plus 5 hours and 11 minutes. From there we went up. Now we picked up a point in between the dotted line and the solid line. How did we pick up this point? The dotted line shows a range of 4 meters. Solid line shows a range of 5.5 meters. And our range was 4.3 meters. So by visual interpolation, you can interpolate it, calculate it by the calculator also. So it can be done visually also. We stopped in between these two lines, and then we drew a horizontal line. So a horizontal line which touched the interpolation line at this point, then you can go up or down and you can read off the height of tide, which came in our case as 1.75 meters. So this was the first question beta which we did. Everybody remembers? Yaad aa gaya beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. So shall we move ahead to the next question? Yes, sir. Please. Okay. Now this next question is based on Dover. Last time मैंने जो आपको photocopies लेने के लिए बोला था, Dover was one of them. So you must be having those photocopies with you. So we will be using that. So you can keep your calculators close by, the tide tables and the photocopy of the pages. So just keep all these items close to you, and we will go into this particular question.
If you are ready, then we will start off. Sir, question note down करो. Okay, beta. Okay, you can. Yes, sir, noted down. Okay, let's go ahead. Been visited. I think we can now run through a couple of more examples. Find the earliest time after 0600 hours on 3rd March 1992 when the depth of Dover with charted depth as 5.4 meters be 10.3 meters. That means when will the depth be 10.3 meters at a place where the charted depth happens to be 5.4 meters. Okay, so basically the question is, they say there is a particular spot close to Dover where the charted depth is 5.4 meters. Now we want to find out what is the earliest time after 6 o'clock on 3rd March 1992 when the depth at this particular location will be 10.3 meters. So this is the question. Any doubt in the question, beta? सर बेसिकली हमें हाइट ऑफ टाइड दी हुई है ना. That's right, beta. We can calculate what is the height of tide. It will be 10.3 minus 5.4. That is 4.9. That's right. Okay, sir. Okay, let's go. So we repeat the first couple of steps. We go to the geographical index of ATT volume 1, alphabetically arranged, reach Dover. And what do we find? Dover is in caps, capital letters, is in bold. Its number is 89. By virtue of being in capitals and bold, Dover is a standard port whose predictions are on page 22. So now we go to page 22 of ATT1 and from page 22, we extract information for 3rd March, which is the date of interest. So here is the predictions for 3rd of March, and these are magnified here for us to use. So this is how the first step is completed. So beta, you can open up your tide tables and you can follow these steps. Go to the geographical index first, look for Dover, get the page number, go to that page and look for 3rd March 1992 times and heights. And you have to note this down in your notebooks. So let me know once you are done. Yes, sir, कर लिया note down. Very good, beta. नहीं सर
Okay, take your time. Let me know once done. हो गया सर. Okay. What about others? Anybody stuck beta? Anybody not able to find? Okay, great. So let's move ahead. We have the times on third and we have the heights. 0543 we have a low water 1.1 meters. 1041 we have a high water 6.0 meters. 1800 1.2 low water 2252 6.3 high water. So let's proceed. So now in this case, we have this interpolation curve for Port of Dover. And if you compare it with what we use for Antwerp, you can see the difference. It's clearly evident. Now, required depth is 10.3 meters as per the question here. Now, the charted depth at that point is 5.4 meters. What shall make up for the difference between the charted depth and the required depth? The differential will have to be made up by the height of tide. So to achieve a depth of 10.3 meters, we shall require a height of tide of 4.9 meters. Okay, so you see beta, in this particular question, now we need a height of tide of 4.9 meters. बिकॉज जब 4.9 मीटर्स की हाइट ऑफ टाइड होगी तभी इस लोकेशन पे डेप्थ 10.3 मीटर्स हो पाएगी. सो यू सी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी डिड. So in the first question we were given a particular time and we wanted to find out what is the height of tide at that particular time. Now they have given us a height of tide and we have to find out at what time it is happening. So it is totally opposite to what we did in the first example. So let's go ahead and see how this is done. This is the daily prediction which we extracted a while back for 3rd of March. Now we get going with the plotting. But before we get going with the plotting, we need certain more information like the duration of tide, range of tide. So since we want this time after 0600 hours, so if you see this daily prediction, obviously the time we are looking at is the time when the required height of tide shall be 4.9 meters between the low water at 543 and high water at 1041. So these two would be the tides of interest. So we have the low water at 543. यहाँ पे question है. Height of low water tide is 1.1 meters. Go ahead beta. सर आपने बोला था कि हमेशा हम हाई वाटर के बाद वाला टाइम लेंगे शायद पिछली क्लास में, तो हम ये 1041 और 1800 के बीच में नहीं लेंगे सर? बेटा हाई वाटर के बाद वाला टाइम लेंगे ऐसा नहीं बोला था. मैंने ये बोला था कि टाइम को हमेशा हाई वाटर के रेफरेंस में लिया जाता है. वो हाई वाटर के पहले भी हो सकता है, वो हाई वाटर के बाद भी हो सकता है. लो वाटर के रेफरेंस से टाइम को नहीं लिया जाता. ओके सर, फिर तो हम ले सकते हैं सर ऊपर वाला भी. राइट. सो यहाँ देखो आप डायग्राम के बीच में यहाँ पे उन्होंने हाई वाटर लिखा हुआ है,
तो ये जितने भी इंटरवल हैं +1 +2 +3 -1 -2 -3 ये किस पे डिपेंडेंट है? ये हाई वाटर पे डिपेंडेंट है, इनका लो वाटर से कोई लेना देना नहीं है। यस सर, अंडरस्टूड सर। और फिर वो 0600 है ना सर, तो टाइम तो 0543 से 1041 के बीच में ही आएगा ना ये? नहीं बेटा, हम 0543 की रेफरेंस लेंगे ही नहीं, हम 1041 की रेफरेंस से ही निकालेंगे। आगे आगे आएगा, आप चेक कर लेना। ओके सर। हम जब टाइम निकालेंगे तो 1041 के रेफरेंस में निकालेंगे, या तो 1041 में कुछ ऐड करेंगे या 1041 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 1041 ही हाई वाटर का टाइम है। हम लोग 543 में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाले नहीं हैं। ओके सर, गॉट इट सर। मैं तो रेंज के लिए बोल रहा था, टाइड की रेंज नहीं करना। जो रेंज है बेटा, दैट इज डिसाइडेड बाय कि जिस टाइम के लिए आपको चाहिए। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ टाइड 4.9 मीटर 6 बजे के बाद। तो आप देखो 543 पे लो वाटर हो रहा है, 1041 पे 6 मीटर का हाई वाटर हो रहा है, तो 4.9 मीटर तो 1041 के पहले आ जाएगा ना। हाँ सर, पहले आ जाएगा। वेरी गुड। सो इसीलिए हमने 543 और 1041 इन दोनों को पिकअप किया है। अब 4.9 1041 के बाद भी आएगा, लेकिन हम उसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें अर्लीस्ट टाइम बोला है आफ्टर 6 o'clock। यस सर। क्लियर बेटा? चलें आगे। यस सर। वेरी गुड। We have high water at 1041 with height being 6 meters. Quickly, please get the duration of the tide. I'm sure you'll agree the duration is 4 hours 58 minutes. Likewise, please do get the range of tide. Range of tide is 4.9 meters. So beta, just write down these times and heights from your table. Don't look at the screen and copy it, no use. From your table, you write down the time and height of low water and high water, and calculate the duration of tide and also calculate the range of tide. ये दोनों काम आप अपनी नोटबुक में करो अभी, and let me know once you are done. ओके सर। Okay. Anybody stuck beta? Everybody got it up to here? Very good beta, great. So we have the duration of tide 4 hour 58 minute. We have the range of tide which is 4.9 meters. अब बेटा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो हाइट ऑफ टाइड हमें चाहिए वो भी 4.9 मीटर है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और जो रेंज ऑफ टाइड आई है वो भी 4.9 मीटर है, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फॉर्चुनेटली दोनों मैच कर गई हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके? यस सर, यस सर। Right. So let's now proceed ahead. Now, in the previous question, we had the interval because we knew the time and we could start from the baseline and go up and come up to the scale. In this case, we have the height of tide that we would like to have. So in this case, we have a starting point on this scale. So let's draw the interpolation line first. We mark off low water of 1.1 on the lower baseline scale. We mark off high water out here on the upper scale. We join them with a straight line. We get the baseline. So beta, please pick up your diagram now and mark off these low water and high water heights and draw the interpolation line. Let me know once the line is there on your chart. डन सर। Very good beta. Anybody stuck up to here, not able to move ahead? Great, very good.
Now we identify this required height on this scale of 4.9 meters. So this is the required height of 4.9 meters. This is the first step now, beta. Whatever height is required, we identify that height. So हमने ये 4.9 को अपने स्केल में आइडेंटिफाई कर लिया है. We follow the reverse order this time. So from this 4.9, we come vertically down to the interpolation line like this. Now where it hits the interpolation line, from where we go horizontally to this curve. Now when we go horizontally to this curve, we could stop here on the left side of it, or we could go to the right of it. Now you have to see whether your time of occurrence is before high water or after high water. ओके. सो अब बेटा हमें इंटरपोलेशन लाइन पे जहाँ पे भी ये वर्टिकल लाइन ने आके टच किया है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे कर्व को दो जगह पे कट कर सकती है. एक तो यहाँ पे लेफ्ट हाई वाटर के लेफ्ट साइड में, और दूसरा यहाँ पे हाई वाटर के राइट साइड में. सो कैन यू थिंक एंड टेल मी वेयर शुड वी स्टॉप अवर हॉरिजॉन्टल लाइन? लेफ्ट में स्टॉप करें या राइट में स्टॉप करें? कहाँ स्टॉप करें? लेफ्ट में. वेरी गुड, लेफ्ट में स्टॉप करेंगे. एंड व्हाट इज द रीजन बेटा, राइट में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हाई वाटर के बाद अर्लीस्ट में तो लेफ्ट में है ना. वेरी गुड बेटा, बिकॉज जो राइट साइड का टाइम आएगा वो हाई वाटर के बाद का टाइम है. हमें अर्लीस्ट टाइम चाहिए, सो हमें हाई वाटर के पहले का टाइम चाहिए. सो हम हाई वाटर के लेफ्ट साइड में ही रुकेंगे जहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट करेगी. लेट्स ड्रॉ इट नाउ. Now we can see it's a flood tide. Why? Because 543 was low water. High water is 1041, so it's flood tide. So the height of tide when it is 4.9 meters, that shall be a time before high water. So that means when we go horizontally from here, we'll be stopping on the left side. That means before high water. So we go to the left up to the curve. And what we find is that there is only one curve here. So the question of interpolation, extrapolation does not arise. So we hit the curve. In this case, it is the spring curve here. So we go and hit here. So don't worry about the range now, because whether it's 5.9 spring here and 4.9 for our case, when there is only one curve, you shall come up to the curve that is there. Now from here, you come vertically down onto the base scale, and you read off this interval from here. And the interval happens to be, when you read up from here, it's 1 hour 40 minutes before high water. Okay, so just do this exercise on your plot beta. Let me know once you reach up to 140. सर मेरा 1 hour 50 minutes आ रहा है. Sir, mine is Okay, coming beta. 1 hour 55 minutes. 155. Yes, sir. Okay, a little bit of error is possible because of the distortions in the photocopy also. How much are you getting beta? सर ये अप्रोक्सीमेटली 1 hour 40 minutes ही आ रहा है मेरा. Okay, all right. सर मेरा 50 आ रहा है. Okay beta, that's fine, no problem.
पर ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसके मार्क्स कटेंगे। नहीं बेटा, सम डिफरेंस इज अलाउड बिकॉज ये जो डायग्राम है इसमें विजुअल इंटरपोलेशन भी अलाउड होती है. So little bit of difference here and there should be fine till the time your values interpolation diagram is correct. Okay, so shall we move ahead beta? Everybody reached up to here? Anybody still stuck? Okay, great. Let's go. It's 1 hour, 40 minutes before high water. So that means the required height of tide shall be 1 hour, 40 minutes before high water, which is at 10:41. The interval is now obtained from the plot, and it's 1 hour, 40 minutes before high water. And what is the time of high water? 10:41. So then what shall be the time when we'll have the required height of tide of 4.9 meters? Obviously, that shall be 10:41 minus this interval, and the time happens to be 0901 hours. So at 0901 hours, you can expect that height of tide of Dover, where the charted depth is 5.4 meters, would be 4.9 meters, making the depth of water as 10.3 meters. Okay, so 0901 hours you will have the height of tide. Go ahead beta. आगे पीछे चलेगा 45 मिनट आगे मेरा थोड़ा ज्यादा आया हुआ है. चलेगा बेटा, चलेगा. You got 145? हाँ सर, इतना का आ गया. हाँ जी सर. That should be okay, not an issue. ठीक है सर. Because हमारी जो मिनिमम रेजोल्यूशन है इस स्केल पे, द मिनिमम रेजोल्यूशन इज 10 मिनट्स. ओके, सो अप टू अबाउट ±5 आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एट ऑल. अगर इससे ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, somebody was getting 150 also, so if you are getting difference more than 5, then just check your diagram once carefully. You will see you have a dotted line curve and you have a solid line curve. So where do we stop our horizontal line in this case? So ऐसे केस में बेटा remember जो dotted line है, dotted line in this case represents a neap range 3.3 meters, and जो solid line है, solid line represents a range of 5.9 meters. अब हमारी रेंज कितनी आई है बेटा? हमारी रेंज आई है 4.9 meters. So when you go horizontal, the dotted line represents 3.3, solid line represents 5.9. We have to stop at 4.9. So you can do interpolation, visual interpolation will also do, or you can do it by calculator also, and you stop in between these two lines. Right beta, did you understand? Yes sir. Okay, so wherever you stop in between these two, you drop a vertical line and you can read off the time before high water. Fortunately, in our question, the area where it touched the graph, we had a single line. So whether dotted or solid, both of them, spring or neap, both of them were at the same point. So there was no need of any interpolation. सर Okay. एक बार इसको अगर फिर से हम बता देना सर. टाइड अगर 3 मीटर या उससे कम होती तो हाइट ऑफ टाइड अगर 3 मीटर से कम होती, 3.3 से कम होती, राइट? यस सर, तो हम नीप टाइड रहते ना, नीप वाला कर्व, डॉटेड कर्व. एग्जैक्टली बेटा, जैसा हमने शुरू में देखा था एक्सप्लेनेशन में कि अगर कभी भी आपकी रेंज नीप रेंज से कम हो जाती है, एनीथिंग लेस देन 3.3, यू विल पिक अप द डॉटेड लाइन ओनली. हम लोग डॉटेड लाइन के बाहर नहीं जाते हैं. एंड सेम वे अगर आपकी हाइट जो है वो 5.9 से ज़्यादा हो जाती है, then you will always pick up the solid line. We don't go outside the solid line.
ओके बेटा, सर। ओके। और बताओ बेटा, सर और क्या डाउट्स हैं? बेसिकली सर इसके लिए हम रेंज को देखेंगे, जो टाइड की जो रेंज है दैट्स कितना से राइट कितने बेटा, तक वेरी कर रही है। exactly. We will see the range of tide to interpolate between the dotted and solid lines. Range of tide. ओके सर, और किस केस में सर इन दोनों के बीच में हम लेंगे? I didn't get you बेटा, ask again. सर वो कौन सा केस बनेगा जिसमें सर ये डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन के बीच में हम इंटरपोलेट करेंगे? बेटा जो अभी हमने डिस्कस किया, let us say you are looking for a height of tide of 3 meters. ओके ओके, सर। अब जब 3 मीटर से आप वर्टिकली डाउन आओगे and you go horizontal after the interpolation line, you will see that dotted and solid line are at different locations. So now यस we सर। need to interpolate and pick up a point between these two. Okay, is it sorted out beta, your doubt? ओके सर, 3 के लिए आएंगे तो इंटरपोलेट करेंगे। ओके Not only 3, I just gave you an example. In fact, any range between, let us say, about 4.5 meter height से लेके up to, let us say, almost low water, that is 1.1 meter. So any height of tide between 1.1 and 4.5, you will need to interpolate, because इस height के बीच में आप देखोगे दोनों के दोनों कर्व जो हैं ये अलग अलग हैं. Solid line is different, the dotted line is different. यस सर। ओके, और डाउट बताओ बेटा. तो मिडिल में ले लेंगे सर इनके, नीप के और स्प्रिंग के बेटा दोनों के मिडिल में ले लेंगे अगर इन मिडल केस में ऑफ नहीं इंटरपोलेशन लेंगे. करना पड़ तो। मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो दो चीज़ें हैं. या तो आप इसे विजुअली इंटरपोलेट कर सकते हो. देखो 5.9 और 3.3 में कितना डिफरेंस है बेटा? 2.4 सर। ओके 2.6. हाँ 5.9 2.6 2.6 यस। 2.6 5.9 3.3 में डिफरेंस है 2.6 मीटर्स का. तो आप जहाँ कहीं भी इंटरपोलेट करना चाहते हो, ये पूरी की पूरी लाइन की जो लेंथ है ये 2.6 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है. डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट 3.3, सॉलिड रिप्रेजेंट 5.9. सो जो गैप है दोनों में, इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग 2.6 मीटर लेंथ. ओके, अब आपको देखना है कि आपकी जो रेंज है ये है 4.9. हाउ फार अवे इट इज़ फ्रॉम 3.3? 1.6 मीटर, करेक्ट? यस सर। सो पूरी की पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2.6 मीटर. आपको कहाँ पे रुकना है? आपको रुकना है 1.6 मीटर की लेंथ पे. सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन फाइंड आउट ए पॉइंट इन बिटवीन दीज टू. द पॉइंट विल बी क्लोजर टू द सॉलिड लाइन एंड लिटिल बिट फार फ्रॉम द डॉटेड लाइन. क्लोजर टू सॉलिड लाइन क्यों होगा? क्योंकि 4.9 इज क्लोजर टू 5.9 एंड अवे फ्रॉम 3.3. ओके, अगर ये 4.6 होता, यहाँ पे हमारी रेंज ऑफ टाइड जो है ये 4.6 मीटर होती, तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आती. तो हम सॉलिड और डॉटेड लाइन के बिल्कुल बीच का पॉइंट ले सकते थे अगर ये 4.6 होता. पर अब ये 4.9 है, तो हम बिल्कुल बीच में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा सॉलिड लाइन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे. सो दिस इज़ नोन एज विजुअल इंटरपोलेशन. विजुअली आपने इसको देखा और इंटरपोलेट कर दिया. आप अगर चाहो तो इसे कैलकुलेटर में मैथमेटिकली भी इंटरपोलेट कर सकते हो. यू वांट मी टू शो यू? इट इज नॉट रिक्वायर्ड. We shall now familiarize ourselves with the pages contained in part 1 of the Admiralty tide tables, the volumes that cover the non-European waters. Now this page in part 1 contains daily predictions of times and heights of high and low waters at the standard ports. And the page looks somewhat like this. We have the page of Bombay on display. This page is more or less very similar to the page we had in ATT volume 1 as well. In this page, on top, we have the port details and its coordinates.
Then we have the year of the tide tables, which in this case is 1992. And then we have the time zone for India, which is minus 530 hours. Okay. Now, beta, first exercise we do is, now we know Bombay is in volume 2 or volume 3, some of the volume other than volume 1. So can you find out this page in your tide table booklet? Okay. How will you find out a particular port, beta? सर ज्योग्राफिकल इंडेक्स से देख के फिर पेज नंबर. Very good, beta. So just do this exercise. Go to the geographical index of volume 2 and see if Bombay is there. If you don't find it, go to volume 3 and try to find it there, and let me know once you have found out. सर ये वॉल्यूम 2 में है सर. Very good. Volume 2, what is the page number, beta? सर बताता हूँ. 153.153 sir. 153 sir. Very good, beta. So page number 153 and volume 2. So others also able to find it, beta? मिला भाई, बॉम्बे वॉल्यूम 2 में ही है. यस सर मिल गया. मिल गया सर. बॉम्बे 442 पेज पे. Okay, great. So this is where it is, huh? Anybody still stuck, beta? Anybody not able to find? Very good, great. So let's go ahead. And then we have this main body of the page, which contains the daily predictions. So this page is similar to what we also had in ATT volume 1. We shall now familiarize ourselves with the diagram that shall facilitate calculation of heights of tide at times other than high water and low water. The diagram that shall be used for all ports of non-European waters is the one that is shown on the screen. There is only one diagram that is used for all ports, in contrast to what we did in ATT volume 1. If you remember, in ATT volume 1, every standard port had its own diagram. So in ATT volume 1, that is European waters, these diagrams are port specific, and other than that, we have the single diagram which shall be used in every case. Now in this diagram, we again have high water at the middle of this baseline. To the right of it, we have this plus 1 hour, 2 hour, 3 hours with plus prefixes. So that's interval after high water. To the left of it, we have interval before high water. Then we have the chart datum out here, this line representing chart datum. Then we have the scale for height of low water. And we also have the scale on top for height of high water. Please pay attention that there are two scales.
one from 0 to 4 and 0 to 7 here. So that is the same scale. The other one is 0 to 8 here and 0 to 14 on top. We have to use the largest possible scale depending on the heights of tide involved. And only care that has to be exercised is that whichever scale is being used for marking the height of low water, same scale should be used for marking the height of high water. So please be a little careful here. Okay. So beta, did you understand these two scales which are given in the diagram? यस सर, जो स्केल नीचे यूज करेंगे वही सर सेम ऊपर यूज करना है. Right, that's right, beta. Now, if you look at the bottom, at the low water scale, there are two scales. One is 0 to 4, another is 0 to 8. And if you look at high water, you have again two scales. One is 0 to 7, another is 0 to 14. So let us say for low water, if you are using a scale of 0 to 4, which scale of high water will you be using? 0 to 7 sir. Very good, beta. So you have to be careful. You have to use 0 to 7. Don't use 0 to 4 scale at the bottom and 0 to 14 on top. Otherwise, the question will become wrong. The 1 unit of your scale should be same whether it is for high water or it is for low water. Sir, can you please elaborate with an example, sir, so that it can be clear? हाँ बेटा, एग्जाम्पल अभी करेंगे. अभी एग्जाम्पल करेंगे, बट इसमें बेटा एग्जाम्पल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप यहाँ पे इंटरपोलेशन लाइन ड्रॉ कर रहे हो और आपने 1 मीटर को यहाँ पे लिया है, where the cursor is right now, which scale are you using? Are you using 0 to 4 or 0 to 8? Sir, 0 to 4. That's right. अब अगर आपने 1 मीटर को यहाँ पे लिया है, हाई वाटर 2 मीटर है, तो उसे कहाँ पे लोगे आप? ये 2 मीटर यहाँ भी लिखा है और 2 मीटर यहाँ भी लिखा है. Which will you take? Left side 2 or the right side 2? Sir, the left side 2 I will take, sir. Okay. अब नीचे आपने 1 मीटर लिया है और एग्जैक्टली इसी के ऊपर यहाँ पे 2 मीटर ले लिया है. Is this making sense? No, sir. No, sir. Which I will take 2, sir. If I will take down 1, then other side I have to take 2, sir. Right. So you will take the right side 2 here. Anyway, it will become clear when we do it in the examples. So let's move ahead. Tide curves here, these curves are based on duration of tide, 5 hours, 6 hours, and 7 hours. Unlike the curves for ATT volume 1, which were based on the range of tide. If you remember, there were two curves, a solid curve for spring range and a dotted curve for broken line curve for the neap range. So in ATT volume 1, these curves were based on ranges. But here, for non-European waters, these curves are based on duration of tide. Okay. So beta, you see these three curves. So this is understood now. These are based on the duration of tides. For 5 hours, we use the innermost curve. For duration of tide, which is 6 hours, we use the middle curve. And for a duration of 7 hours, we use the outermost curve. If our duration is anything in between these values, let us say our duration of tide is 5.5 hours. So then we will go in between the 5 and 6 curves. So exactly in the middle will be our particular curve which we should be using. So in volume 1, this was not based on time. In volume 1, this was based on the range of tide. Clear, beta? Understood? Yes, sir. Very good. There are three curves for 5 hours, 6 hours, and 7 hours. This curve, which is now being marked by the blue arrow out here, this is the curve for 5 hours duration. This is the curve for 6 hour duration, middle one, and the outermost
is the curve for 7 hours duration. Now, if our interval, or our duration rather, if our duration of tide falls between 5 and 6 hours or 6 and 7 hours, we shall do the linear interpolation, and interpolation can be visually done. But if our duration of tide happens to be outside 5 hours to 7 hours range, extrapolation is not allowed. No extrapolation allowed, interpolation is allowed. Needless to repeat again, this side of the curve is obviously before high water, and this side of the curve is after high water. So have a good look at this diagram, beta. Read these points in your mind. Let me know any doubt coming anywhere. सर इसके अंदर स्प्रिंग और लीव कर्व नहीं होता? नहीं बेटा, इसमें स्प्रिंग और नीप कर्व पे हमारी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होती है. इसमें सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ टाइड पे ही कैलकुलेशन बेस्ड होती है. एंड सर हमें मतलब पेपर में एग्जाम में जैसे पता कैसे चलेगा कि ये वाला डायग्राम सही है या फिर वो दूसरे जो पोर्ट वाइज है वो वाला सही है? I didn't get you beta. Can you ask again? What is the doubt? सर लाइक जो टाइड का ये ग्राफ है जो हमें दिया हुआ है, हमने जो पहले वाले किए थे वो तो किसी स्पेसिफिक पोर्ट के लिए थे ना. अब ये वाला तो सब पे एप्लीकेबल है, तो ये वाला ही ग्राफ उन पे भी एप्लीकेबल होगा जो हमने पहले किए थे? ओ, ये जो ग्राफ है बेटा, ये आपको ATT वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के आगे ही मिलेगा. दिस ग्राफ इज नॉट गिवन इन ATT वॉल्यूम 1. तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि वो जो पोर्ट है वो कौन से वॉल्यूम के अंडर आती है. अगर वो 2 और 3 के अंडर आती है तो हम ये वाला ग्राफ यूज़ करेंगे जो अभी स्क्रीन पे हमारे सामने है. अगर वो पोर्ट वॉल्यूम 1 में आती है तो हमें उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पोर्ट के ग्राफ को यूज़ करना पड़ेगा. इसे यूज़ वॉल्यूम 1 के लिए नहीं कर सकते. ओके सर, थैंक यू. ओके, और बताओ बेटा, और डाउट्स? सर हाँ बोलो बेटा. 5th 6th 7th कौन सी कर्व यूज करेंगे सर? यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं 5 घंटे का कर्व यूज़ करूँ, 6 घंटे का यूज़ करूँ या 7 घंटे का, कौन सा यूज़ करूँ, राइट? हाँ जी, हाँ जी. ओके, अब आपको बेटा उन्होंने एक पर्टिकुलर पोर्ट दी और एक पर्टिकुलर डेट दे दी. ठीक है, कि इसका हाइट ऑफ टाइड निकालो, राइट? अब हमने क्या किया, हम उस पोर्ट में चले गए, हमने उसका जो हाई वाटर लो वाटर का टाइम निकाल लिया, और हाई वाटर और लो वाटर के टाइम का डिफरेंस, दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइड, वो भी हमने निकाल लिया. अब वो जितनी ड्यूरेशन हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आती है उसी के हिसाब से हमने कर्व को पिकअप करना है. अगर हमारी ड्यूरेशन 5 घंटे आएगी तो ब्लू कलर वाला कर्व पिक करेंगे. अगर उस पर्टिकुलर डे उस पर्टिकुलर पोर्ट पे ड्यूरेशन 6 घंटे की है तो हम रेड कलर वाला कर्व पिक करेंगे, और अगर ड्यूरेशन 7 घंटे की है तो हम ग्रीन कलर वाला कर्व पिक कर लेंगे. ओके बेटा? हाँ सर. गेटिंग क्लियर? यस सर. राइट. और बताओ बेटा, और कोई डाउट? वेरी गुड, ग्रेट. लेट्स मूव अहेड नाउ. यही मेन डिफरेंस है वॉल्यूम 1 में और बाकी के वॉल्यूम्स में, कि जो ये डायग्राम हम यूज़ करते हैं ये डायग्राम अलग है. So once you have understood this, rest of the procedure is more or less the same. So let's go ahead. Having completed the familiarization process, now let's solve some questions and apply what we have learned. Find out the height of tide at Suez at 1100 hours GMT on 28th April 1992. Okay. सो बेटा हमें अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया है. सुएज पोर्ट
सो पहली एक्सरसाइज ये करो बेटा, मुझे ये बताओ ढूंढ के कि ये कौन से वॉल्यूम में आता है. इज इट इन वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 1? So everybody open up your tide tables. Let me know where does this port lie. सर वॉल्यूम 2 में आता है, पेज नंबर 111. Very good. Let others also calculate, others also find out. So everybody got it, beta? Anybody facing any problems? मिल गया सर. Yes, sir. So is 111. sir. Very good, beta. Great. Let's move ahead. Now, Suez being in ATT volume 2, we go to the geographical index of volume 2, which is alphabetically arranged. So we reach Suez, and when we reach Suez in the geographical index, we find Suez is in bold and capital letters, implying Suez is a standard port of ATT volume 2, whose predictions are on page 111. So from here, we go to page 111 of ATT volume 2, and we get the information for Suez. Here we pick out the daily predictions for 28th of April, and you can see this is the information for 28th April. Okay. So just note down this question in your notebooks, beta, and note down these heights and times of tide for Suez on 28th April. Let me know once you are done and we'll proceed ahead. Don't copy it from the screen, pick it up from the tide tables. डन बेटा, चलें आगे. Yes, sir. Okay. Also significant here would be the time zone in which these times are tabulated. Time zone is marked here. We have already discussed earlier. And the time zone used for Suez is -2 hours. What does it mean? That Suez time is 2 hours ahead of GMT, or GMT is 2 hours behind Suez. Okay. So बेटा ये जो टाइम जोन यहाँ पे दिया हुआ है, it is important in this particular question. Why? Because इन्होंने जो हमें हाइट ऑफ टाइड मांगी है वो 1100 आवर्स GMT पे मांगी है, स्वेज टाइम में नहीं मांगी है, GMT पे मांगी गई है. जो ये डेली पेजेस पे हमें हाइट्स दी होती हैं, दे आर गिवन इन द लोकल टाइम्स, सो दीज आर स्वेज टाइम्स. अब अगर स्वेज टाइम को GMT में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम इस टाइम जोन को यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं? स्वेज के टाइम में अगर ये अप्लाई कर दिया जाए, मीन्स
स्वेज के टाइम में अगर -02 आवर 00 मिनट कर दिया जाए तो GMT आ जाएगा, और अगर GMT से स्वेज टाइम निकालना हो तो इसके ऑपोजिट करना पड़ेगा। GMT में 2 घंटे प्लस कर दिए जाएं तो स्वेज टाइम आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टाइम जोन। इज इट ओके बेटा? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा। सर तो सर फिर GMT जो GMT टाइम क्वेश्चन है उसको स्वेज टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ बेटा, हम उसी को कन्वर्ट करेंगे स्वेज टाइम में और फिर तो सर निकालेंगे। ये -200 आवर्स प्लस हो जाएगा ना सर, माइनस GMT है सर, टाइम जोन माइनस में है सर, तो GMT में ऐड होगा, करेक्ट? Correct, it will be added to the GMT to get the sway's time. Okay, let's move ahead. Now, these times here would be in the Suez Standard Time, or the Egyptian Standard Time. And if we have to deal with GMT, we'll have to convert GMT into the standard time of Suez before we can continue with our calculations. So we just saw that the time zone for Suez is -2. Tide required is for 1100 hours GMT. So we'll have to convert GMT into Suez time. So GMT is 28th April, 11 hours. Zone difference is 2 hours. We know Suez is 2 hours ahead of Greenwich. Therefore, when it is GMT 1100 hours, Suez time shall be 1300 hours. So that means we have to calculate the height of tide at 1100 hours GMT, which is same as Suez time 1300 hours. So is this okay up to here, beta? Any doubts up to here? No, sir. No, sir. Very good, beta. Let's move ahead. And this daily prediction for 28th, we have just picked up from part 1, page 111 of volume 2. So beta, now we require the... Sir, but this whatsoever we are given in volume 2, this daily pages, this is in zone time or sir, this is in GMT time, sir? ओके बेटा, जोन टाइम जो है ये कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है. योर क्वेश्चन शुड बी वेदर दे आर गिवन इन लोकल टाइम और GMT. Yes, sir. Yes, sir. That's only. All the tide times are given as local times. Okay, sir. Okay. Nothing is given in GMT. हाँ, अगर कहीं पे GMT लोकल टाइम है तो वहाँ पे GMT will match. But otherwise टाइड टेबल्स में जहाँ कहीं भी आपको टाइम मिलेगा वो हमेशा लोकल टाइम ही होगा. उसका रीज़न ये है that let us say you are sitting in मुंबई. आप मुंबई या बॉम्बे का अगर टाइम वहाँ से निकालते हो तो आपको उसमें कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. जो टाइम आपको टेबल से मिला that is the time as per your country's time when the high tide or low tide will be there. So it is much easy for us to use. अगर सारे GMT में दिए होते तो फिर तो उनको कन्वर्जन करने में ही कॉम्प्लिकेट हो जाता काम. So that's why all these times are given as local times. So that is the standard time of the country. That's right, beta. Where the port is, standard time of that particular country. Yes, sir. Okay, let's move ahead. Now, since we need it for 1300 hours Suez time, so this interval, this time shall fall between this high water at 0842 and low water at 1430. So we'll have to basically work out in this period. Now we have this graph diagram which we just discussed. We have high water at 842 when the height is 1.6 meters. We have low water at 1430 when the height is 0.8 meters.
From here, we can work out the duration of tide, which comes to 5 hours 48 minutes. And from here, we can work out the range of tide, which is 0.8 meters. So beta, just note these values down and work out the duration and range. Let me know if you have any doubts anywhere. No, sir. Very good, beta. Let's proceed ahead. And the time for which tide is required is 1300 hours Suez time. So we can find its interval after high water because it's a ebb tide, it's a falling tide. So we can find out this interval, and we find that the interval from 0842 to 1300 hours is 4 hours 18 minutes after high water. Now, having got this information, we go on to plotting on this side. So first, we shall mark off the low water height on the lower scale out here and we know the low water is 0.8 meters. So we mark off 0.8 meters. We are using the bigger scale, the 0 to 4 and 0 to 7.1. On the upper scale, we shall mark the height of high water. We join them and we get the interpolation line. Okay. So you see beta, the low water was 0.8 meters. हमने low water में 0 to 4 का scale use किया है, 0 to 4 scale. So 0.8 meters came here at this particular location. Since we used 0 to 4 here, we will be using 0 to 7 on top, 0 to 7. So 0 to 7 वाले scale पे 1.6 meters जो है, it comes here, 1.6. So these are the 2 points, we join them and we get the interpolation line. So any doubts up to here, beta? Sir, the thing is there are two mentioned above, sir, for the high water and low water. So which one we have to choose? Ask again, beta. Sir, there are two scales mentioned. Sir, 0 to 2 and the below one is 0 to 1. Right. Beta. So sir, which one we have to use? Very good. अब बेटा आप ये देखो कि लो वाटर के लिए आपने कौन सा स्केल यूज किया है. आपने लो वाटर के लिए 0 to 1 यूज किया है या 0 to यूज किया है. नीचे कौन सा यूज किया है आपने? Are you there, beta? Are you there? 0 to 1, sir. 0 to 1 यूज किया है. वेरी गुड, क्योंकि 0.8 मीटर को हमने यहाँ पे शो किया है. So we have used 0 to 1 at the bottom. We will have to use 0 to 1 at top also. Okay, sir. Okay, that is why 1.8 has gone here. Okay, beta, clear? Yes, sir. Okay, let's move ahead. It's 0.8 height of low water and 1.6 meters the height of high water. Now we come to the baseline here. Our interval is 4 hours 18 minutes after high water. We can see here that for each hour there are 3 divisions, so each division represents 20 minutes. Accordingly, we can reach where it represents 4 hours 18 minutes after high water, so it shall be to the right. And from there, we go vertically up to which curve? Our duration is 5 hours 48 minutes, so we shall be visually interpolating between 5 hour and 6 hour curve. So we go vertically up from here. This is the interval after high water. So we go vertically up to 5 hours 48 minutes. And from there we go horizontally to hit the interpolation line. Okay. So बेटा सबसे पहले तो हम 4 hour 18 minutes plus गए high water से, because our time was 4 hour 18 minutes after high water.
And when you go up now, first you hit the 5-hour curve. After some time you get the 6-hour curve, and then on top you have the 7 hours curve. अब हमें कहाँ पे रुकना है? हमने ये डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइड. हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ टाइड है वो है 5 आवर 48 मिनट्स. सो सबसे नीचे वाला जो कर्व था वो 5 घंटे के लिए था, मिडल कर्व 6 घंटे के लिए था. इन दोनों में जो डिफरेंस है ये 60 मिनट्स, 1 घंटे का डिफरेंस है. हमें 48 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली आगे जाना है 5 आवर से. सो विजुअली यू कैन इंटरपोलेट. इट इज़ ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल इंटरवल. 5 से 6 घंटे का जो पूरा इंटरवल है 60 मिनट का, उसका ये 3/4 है. सो अप्रॉक्सीमेटली हमने यहाँ पे ये 3/4 पॉइंट सिलेक्ट किया एंड वी वेंट हॉरिजॉन्टल. सर एक क्वेश्चन है सर. बोलो बेटा. सर ये जैसे पहले आपने उसके क्वेश्चंस कराए थे एडमिलिटी, मतलब सर वॉल्यूम 1 के सर, उसमें सर 5 आवर्स अगर वहां दिया होता 5 आवर्स 48 मिनट्स, तो 5 आवर्स के आगे हम लोग जाके फिर स्प्रिंग और नीप के बीच में प्लॉटिंग करते थे. यहाँ पे तो सर हम लोग पीछे आ रहे हैं सर, ऐसा क्यों सर? आई डिडंट गेट यू बेटा. हम 5 आवर के पीछे नहीं आ रहे हैं. ये देखो सर ये हम क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है सर ये इसमें वीडियो में, बट आई थिंक तो सर ये 5 आवर्स के पीछे है सर. +1 +2 +3 +4 और +4 के बाद है सर. बेटा यू आर सेइंग कि जो ये नीचे हमने सर्कल लिया है ये 5 आवर के पीछे क्यों लिया है, राइट? यस सर. हमें तो 5 आवर के आगे लेना चाहिए. दिस इज द डाउट ना? यस सर. ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा. ये जो पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं ना, दिस पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटरवल फ्रॉम हाई वाटर. इंटरवल. अब हमारा इंटरवल कितना है? हमें जिस टाइम के लिए टाइड चाहिए वो है 1300 आवर्स. हाई वाटर का टाइम है 842 आवर्स. हमारा इंटरवल है 418. ओके ओके सर, ओके सर, वो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा मैं ड्यूरेशन और इंटरवल में, उस वजह से. ठीक है सर. दैट इज व्हाई वी केप्ट इट एट 4 आवर एंड 18 मिनट्स. जब हम यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाएंगे, अब हमें कहाँ पे रुकना है? दैट इज डिसाइडेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ टाइड विच इन आवर केस इज 548. ओके, एनी मोर डाउट अप टू हियर बेटा? Very good, great. So once we hit the interpolation line, now it is easy, simple. Where this horizontal line hits the interpolation line, from here we go vertically upward, and where it cuts this scale out here, we read it on the same scale on which the height of low and high water were marked. And when we read from here, we find that the height of tide at 1300 hours Suez time, which is the same as GMT 1100 hours, is 0.9 meters. Therefore, height of tide at GMT 1100 hours on 28th April is 0.9 meters. So yes, that completes our question. So did you get 0.9? After 7 meters forward, aft 8 meters, wants to clear a bar where charted depth is 6 meters at Mumbai. What you have in bracket as 4359 is the number for Port of Mumbai in the tide tables. On 20th January 1992, with a UKC, that is under keel clearance of 1 meter, find the earliest time in the evening to cross the bar. Maximum draft 8 meters. Desired UKC 1 meter. Desired depth, therefore 9 meters. Charted depth 6 meters. And what makes up for the difference then? That's the desired height of tide is 3 meters. That means the earliest when the vessel can cross the bar with a UKC of 1 meter is when the height of tide is 3 meters. So then the question basically reduces to finding the earliest time on the evening of the given date.
when the height of tide is 3 meters, but it should be found on a rising tide. Why should it be on the rising tide? Because he says the earliest time. So you do not want to have UKC less than what is given. And the earliest time, if it has to be found, it is on the rising tide. If it was to be on the ebb tide, then that shall be the last time or the latest when the vessel can sail with that particular UKC. So here we have to make sure that we find this on the rising tide. We go to the geographical index of 82 and we find Bombay. And we notice that Bombay is in caps and bold. Also the number 4359, the tide table number for Bombay, which was also mentioned in the question, being reflected here. Bombay, we infer from here, is a standard port whose daily predictions are on page 153. We go to page 153 and we pick up the predictions for 20th and 21st of January. Okay, beta, just have a good look and let me know if there is any doubt up to here. सर ये राइजिंग टाइड वाला कॉन्सेप्ट बता देना सर. Okay. Okay, let's go ahead. When we see the solution, when we see the curve, the graph, I'll explain it to you there. Okay, sir. Why we have picked up for 2 dates? Why? Because though we wanted for 20th, we see that on 20th, 1207 to 1812 is an ebb tide. And in the evening, the rising tide starts from 1812. So obviously, we have to find the time between 1812 and 0057. Therefore, we have picked up the predictions for 20th and 21st. So our question is simplified to finding the earliest time on rising tide when the height of tide shall be 3 meters. We have just discussed that we shall have to work it between 1812 on 20th and 0057 on 21st. Okay. So now you have a look here, beta. They want us to find out the earliest time in the evening of 20th January when the height of tide is 3 meters because the vessel wants to cross a bar, a shallow patch. Now, if you look carefully, 1207 was a high tide here, 4.2 meters. So if the vessel wants, vessel can pass the tide, pass the shallow water at any time. 4.2 meters is more than 3.0. Now, after 1207, the height of tide is going to reduce. It is going to go up to 0 at 1812. Now, the height of tide will be 3 meters somewhere in between also. Okay, let us say, for example, at 1400 hours, the height of tide is 3 meters. Now, they are not asking us this particular time. This is the last time when it can cross the shallow patch. After that time, it will not be able to cross. What they want is the earliest time to cross the bar. So earliest time will come in between 1812 and 0057. Because 1812, the height of tide is 0. After that, the height of tide will start to increase. And some point of time, it will be becoming 3.0 meters. Yes, sir. Go ahead, Sir, but इस क्वेश्चन में सर उन्होंने इवनिंग मेंशन करके रखा हुआ है. Right. और सर 20 की सर डेट दे के रखी हुई है. Right. सर ये 12 से 18 के बीच में बेसिकली मतलब माइंड में तो वही आ रहा था कि 20 को लेंगे. Beta, by evening, any time in the PM will be considered as evening. Okay. Okay. Don't be so specific about the time of the day which they give here.
evening or morning, okay? It is a vague reference. What you should be careful about, are you being or are you calculating the earliest time or the latest time? This is of importance here. तो सर अर्लीस्ट टाइम जहाँ पे भी कैलकुलेट करना होगा वहाँ पे हम लोग ये टाइड मेंशन करेंगे, राइजिंग टाइड। राइजिंग टाइड, जहां पे भी उन्होंने अर्लीस्ट बोला है वहां पे हम राइजिंग टाइड का जो ड्यूरेशन होगा उसे कैप्चर करेंगे। राइजिंग टाइड, राइजिंग टाइड मींस व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम 1812 टू 0057। अगर किसी भी क्वेश्चन में उन्होंने हमें यहाँ पे लिखा होगा व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम और लास्ट टाइम in the evening to cross the bar, then we will consider the falling tide. अब अगर यहाँ earliest की जगह पे last time होता, then we would have considered 1207 to 1812 period. ओके सर। Okay. Okay. Here is the diagram to facilitate interpolation. And now we find out the duration and range of tide for between these two. So we have low water at 1812 on 20th when the height of tide is 0. We have high water at 0057 on 21st when the height of tide is 5.1 meters. The difference between these two gives us the duration of tide, which is 6 hours 45 minutes. The difference between these two gives us what we call as the range of tide, which is 5.1 meters. We need to know the time when the height of tide shall be 3 meters. So we come on this side and start plotting. We decide on the scale. Our high water height is 5.1. So we can use the bigger scale. That means the 0 to 7 and 0 to 41 here. We mark the low water on the low water scale, 0. We mark the high water on high water scale, which is 5.1. We join them with a straight line and get the interpolation line joining 0 on this line, this scale, and 5.1 out here. Now, we want to know the time when the height of tide is 3 meters. So we pick up the desired height on the scale out there. We have done similar exercise in ATT 1 questions also. Now from here, we come down vertically downwards to hit the interpolation line. And when we hit the interpolation line, from here we go horizontally to the right, and we need to decide whether to stop on the left side or to the right. In our case, it's a rising tide. So our event shall be before high water, and before high water is this side of the curve, right? So we shall be stopping on the left side, and to which curve, whether 7 meters, 6 meters, or 5 meters, our duration is 6 hours 45 minutes. So we visually interpolate. This is 5, 6, and this is 6:45 out here. And from here we come vertically down, and we read off this interval on the base scale out here, and we find that the height of tide shall be 3 meters at an interval of 2 hours 55 minutes before high water. So the interval from high water, 2 hours 55 minutes before high water, when we shall have the required height of tide. And what is the time of high water? It is 21st 0057. The height of tide shall be 3 meters, 2 hours 55 minutes before that. So the time when we shall have the required height of tide, it will be 20th January, 22:02 hours, 2200 hours and 02 minutes shall be the time when we shall have the required height of tide of 3 meters on a rising tide, and that shall be the earliest when the vessel can cross the bar with a UKC of 1 meter in the evening on a rising tide. Okay, so have a good look at this solution, beta. Let me know your doubts.
Were your answers matching, beta? Close? Yes, sir. Okay, all right. All clear, beta? Shall we move ahead if you are comfortable? एक मिनट सर अभी करते हैं. Okay, beta, all right. Yes sir, okay sir. Okay, good. Let's proceed ahead. Let me show you one more concept now, which can be used in tide related questions. हमने अभी तक दो टाइप के क्वेश्चन किए हैं. One is they may give us some time and they may tell us to find out the height of tide at that particular time. The second concept which we did was they give us a certain height of tide, like the one in this question which we have on the screen now, and they want us to find out at what time that height would be occurring. Achieved. So these are the two types which we have done till now. Now there is a third type of question which sometime comes, and that is related to the air draft of the ship or the clearance from a bridge. So let's see that type of question now. Yes sir. Let's have a look at the last question of this particular video. Given height of bridge 50 meters, height of mean high water spring tide 4 meters, charted depth 10 meters. Find the earliest time when a vessel with 12-meter draft can sail out of Bombay on 5th March 1992 to pass safely with a minimum 1 meter clearance under the bridge. And what will be her UKC? Maximum height of the vessel from keel to top of the mast is given as 62 meters. Okay, so this is the question, beta. Read this question very carefully. If you want, you can note this down in your notebooks, and you can make a rough diagram kind of thing, so that will be easy to understand. So once you have done that, let me know, then we will proceed ahead. Okay sir. Okay, all right. चलें आगे बेटा? Sir, write down करना sir. Okay, all right. Let me know if you don't understand any of the things given here in the question. अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, just ask me.
Done, beta? Done? Shall we go? सर एक बार इस लाइन को क्लियर कर देंगे आप सर? हाइट ऑफ मीन हाई वाटर स्प्रिंग टाइड इज 4 मीटर एंड चार्टेड डेप्थ इज 10 मीटर. ओके बेटा, जहां पे ये ब्रिज है, जहां से वेसल ने पास करना है, उस पर्टिकुलर जगह पे जो चार्टेड डेप्थ है वो 10 मीटर लिखी हुई है. It is mentioned in the chart that the depth is 10 meters. So 10 meter is the charted depth at that particular location. Okay, Okay, sir. this is clear? Yes, yes, sir. And उसी चार्ट पे बेटा कहीं ऊपर या नीचे जहां पे भी चार्ट का टाइटल लिखा होता है, उसके साथ ही उन्होंने लिखा है मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स इज 4 मीटर्स. इसका मतलब है कि मीन हाई वाटर स्प्रिंग का जो लेवल है इस पर्टिकुलर जगह पे वो चार्ट डेटम से 4 मीटर ऊपर है. दिस इज 4 मीटर इज द हाइट ऑफ मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स. दैट्स आल्सो क्लियर? यस सर. ओके, और बताओ बेटा, एनीथिंग एल्स व्हिच इज नॉट क्लियर? Okay, so let's proceed ahead and let's see how this question is done. It's a question from one of your past MMD exams for second mates. Incidentally, the previous question was also from the past papers. This question, which looks little confusing, can become very simple if you can transfer this information onto an appropriate diagram. Now, since we are given the charted depth, so we can start with the seabed. Let this line represent the seabed. As the charted depth given is 10 meters, that means the chart datum is 10 meters above the seabed. So we go to 10 meters above the seabed, and what we get is the level of the chart datum. Why? Because the charted depth is measured from chart datum. Then we are given the height of mean high water spring tide. And we know all tide heights are given from chart datum. So that means if we go 4 meters above the chart datum, we shall have the level of the mean high water spring. Now, next we have is the height, charted height of the bridge, which is 50 meters. And in Tide Video 1, we learned that all the charted heights and elevations are with respect to mean high water spring. So if we go 50 meters above the mean high water spring level, we shall get the bridge. So we go 50 meters above this, and what we get there is the bridge. Okay, so have a good look at the diagram, beta. Let me know any doubts up to here. No, sir. Okay, great. So we have seen now, हमने यहाँ पे सीबेड से शुरू किया था. सीबेड से चार्टेड डेप्थ की हेल्प से हमें चार्ट डेटम मिल गया. मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स की हाइट से हमें MHWS का लेवल मिल गया. और हमें ये भी पता है कि जो भी ब्रिजेस की हाइट दी होती है चार्ट पे, इट इज़ गिवन विद रेफरेंस टू MHWS. सो हमने ये 50 मीटर्स की डेप्थ को यहाँ इंडिकेट कर दिया एंड वी गेट द ब्रिज लेवल. सो वी हैव द seabed, chart datum, mean high water spring and bridge level all in our diagram. So let's proceed ahead now. Now, if we add all these three components, that shall give us the height of the bridge from the seabed. So seabed to bridge height becomes then 64 meters. So you see, seabed to the bridge height is total 64 meters. Right, beta? Yes, sir.
Okay, let's go ahead. Question wants the minimum mast clearance from the bridge, under bridge clearance of 1 meter. That means our mast cannot cross this line. This is the highest point to which our mast top could be reaching when we are crossing the bridge. So 1 meter clearance is required. So हमने वो 1 meter clearance को ऊपर ही मार्क कर दिया है. Right, beta? Clear? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Now, mast to keel is given as 62 meters. Top of the mast to the keel is given as 62 meters. So if the top of the mast is in line with, touching this line, then if we come 62 meters below this, we shall have the keel of the vessel. And the vessel is then like this. And we have the mast. So top of the mast to keel is 62 meters. So beta, can you tell me what will be the UKC for this particular ship? 1 meter, sir. Very good, beta. Very good. So that means from bridge to the keel becomes 63 meters. Bridge to the seabed is 64 meters. Therefore, this whatever is left here is the under keel clearance, and that under keel clearance is obviously then only 1 meter. So you see, beta, the question was looking little complicated and confusing. But once you make a stepwise diagram, everything falls into place. And you are very easily able to find out what will be the required UKC. So this was one of the items which they wanted us to find. What will be her UKC when the vessel passes? So this has been found out now. So this kind of diagram needs to be made in these questions. And once this is done, it gives you clarity. So up to here, clear, beta? Shall we move ahead now? Yes, sir. Very good, beta. Now we also have the draft of the ship. So from the keel, if we go 12 meters up, we'll get the sea level because the draft is given as 12 meters. So this gives us the sea level. Once we have the sea level. Okay, so now we have the sea level also. We know the draft of the ship. Can you tell me, beta, what will be the height of tide now? Sir, 3 meters. Very good, beta. Very good. So it is very clear from the diagram. The height of tide required is 3 meters. Depth of the seabed from the sea level becomes the depth of the sea at that point of time, which becomes 12 plus 1 as 13 meters. And what does the depth of the sea comprise of? It comprises of the charted depth and the height of the tide. So obviously, this depth of the seabed shall be charted depth, which is 10 meters, and this height, which is the height of tide. So that means when the vessel crosses this bridge with the under bridge clearance of 1 meter, that time the height of tide required shall be 3 meters, and UKC then would be 1 meter. Okay. So beta, in these type of questions, अगर ऐसा सवाल हमें आता है तो हमें ये डायग्राम बनानी पड़ेगी. एग्जैक्टली सिमिलर डायग्राम जैसी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बिल्कुल ऐसी ही डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, नंबर 1 व्हाट इज द यूकेसी इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड नंबर 2 आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द हाइट ऑफ टाइड रिक्वायर्ड. ओके, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर हाइट ऑफ टाइड 3 मीटर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा इस केस में? हाइट ऑफ टाइड लेटर से 3.5 मीटर हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ब्रिज क्लियरेंस कम हो जाएगी. वेरी गुड. ब्रिज की जो क्लियरेंस है वो कम हो जाएगी. हमें तो 1 मीटर की क्लियरेंस चाहिए,
लेकिन अगर हाइट ऑफ टाइड बढ़ गई तो फिर हमारी क्लियरेंस जो है ये कम हो जाएगी। अच्छा, अगर बेटा हाइट ऑफ टाइड कम हो जाती है, 3 मीटर से कम हो जाती है, लेट अस से 2 मीटर हो जाती है, तो क्या होगा? ग्राउंड हो कैसे जाएगा। कट जाएगी? क्लियरेंस बढ़ जाएगी। वेरी गुड, क्लियरेंस तो बढ़ जाएगी पर साथ में कुछ और भी होगा। यू कैसे कट जाएगी? हाँ, यूकेसी 0 हो जाएगी बेटा, जहाज बैठ जाएगा। सो यू सी दिस इज ए वेरी डेलिकेट बैलेंस। ब्रिज के ऊपर से आपको क्लियरेंस मिल रही है और नीचे से आपको यूकेसी मिल रही है। सो दिस इज द थिंग। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन के टाइड बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, राइट? यस सर। सर एक डाउट था। बोलो बेटा। सर आपने स्टार्टिंग में कराया था कि जो चार्टेड बॉडी की क्लियरेंस होगी वो एचडी से होगी। बेटा आस्क अगेन, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। स्टार्टिंग में आपने बताया था कि जो चार्टेड बॉडी की क्लियरेंस होगी वो एचडी से मेजर करेंगे, हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से। नहीं बेटा, आई टोल्ड यू दैट इट इज measured फ्रॉम मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स। HAT बेटा कुछ एक चार्ट्स में यूज होता है, स्पेशली द ओल्डर चार्ट्स जिनका पुराना एडिशन अभी भी यूज में है, वहाँ पे HAT यूज होता है। बट मोस्ट ऑफ द न्यू चार्ट्स, द लेवल विच इज यूज्ड एज ए रेफरेंस फॉर द ब्रिज हाइट्स इज द MHWS। एंड सेकेंड इंडिकेशन बेटा आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी। अगर उन्होंने क्वेश्चन में हमें MHWS की जगह HAT दिया होता तो हम अपना रेफरेंस लेवल HAT रखते। सो दैट्स वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। यस सर। ओके, ऑल राइट। यस सर। ओके सर ये बात दोबारा बोलना एक बार। विच वन बेटा? HAT को कब रखेंगे अपना प्रेफरेंस? बेटा आपको अगर क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ MHWS की जगह पे HAT दिया होता तो वी विल अज्यूम कि जो ब्रिज की हाइट है वो HAT से ली गई है, तो हम HAT का लेवल यूज कर लेते। यहाँ उन्होंने MHWS दिया है तो हम MHWS को यूज कर लेंगे। ओके, HAT was used Okay, basically sir, thank you. for in the olden Yes. charts. In the most modern charts, MHWS level is used. ओके Okay, sir. ओके, पर आपको बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको MHWS या HAT में से जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, आपने तो बिना किसी डाउट के उसी को अपना रेफरेंस लेवल मान के हाइट को डायग्राम में शो कर देना है। ओके Okay, sir. ओके, अब बेटा एक और चीज मुझे बताओ। हमें ये पता चल गया कि हाइट ऑफ टाइड कितनी होगी। अगर हाइट ऑफ टाइड बढ़ेगी तो क्लियरेंस कम हो जाएगी, और अगर हाइट ऑफ टाइड कम होती है तो यूकेसी कम हो जाएगी। अब लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। फाइंड द अर्लीस्ट टाइम when the vessel with 12 meter draft can sail out of Bombay on 5th March 1992। अब वो हमसे अर्लीस्ट टाइम पूछ रहे हैं बेटा। हमें 1 मीटर की क्लियरेंस रखनी है ब्रिज से, अर्लीस्ट टाइम पूछ रहे हैं। अब दिमाग लगा के मुझे ये बताओ कि ये जो अर्लीस्ट टाइम होगा ये फॉलिंग टाइड पे होगा या राइजिंग टाइड पे होगा? सर राइजिंग पे होगा ना सर? तो फॉलिंग पे होगा ये वाला। Falling पे होगा। बेटा हम यूकेसी पे बेस्ड नहीं कर रहे अपना डिसीजन, हमारा डिसीजन ब्रिज क्लियरेंस पे बेस्ड है। तो फॉलिंग पे करेंगे। वेरी गुड बेटा, फॉलिंग टाइड पे होगा ये। फॉलिंग टाइड पे क्यों होगा? लेट अस से टाइड फॉल कर रहा है, अभी हाइट ऑफ टाइड है 3.5 मीटर। अगर हाइट ऑफ टाइड 3.5 मीटर है तो हमारी ब्रिज क्लियरेंस अभी बनी नहीं है। ब्रिज क्लियरेंस विल बी हाफ ए मीटर ओनली, सो वी विल हैव टू वेट। अब 3.5 मीटर से लेवल आ गया 3.4, 3.3, 3.2, 3.1। जैसे ही ये 3 मीटर का लेवल आया हमारी 1 मीटर की क्लियरेंस आ गई एंड वी कैन सेल आउट। We cannot sail out before that point of time. So that is the earliest time when the vessel can sail out.
Okay, beta, is it making sense? Okay, let's see it once again in the अगर video. राइजिंग के टाइम पे करोगे अब ठीक है बेटा, मान लेते हैं टाइड तो राइज राइजिंग में कर रहा है। करोगे तो क्या प्रॉब्लम मैं अभी बताता हूँ बेटा, लेट अस से हाइट ऑफ टाइड राइज कर रही है 2.9 मीटर है। कैन द वेसल सेल आउट? 2.9 मीटर height of tide. Do we have 1 meter clearance? So yes, we can fill out. No, sir. We have, beta, we have 1.1 meter clearance, na? If the height of tide is 2.9, the under bridge clearance is 1.1, so we can sail out. Yes, sir. अगर 3 मीटर होगा, then also we can sail out. लेकिन 3.1 जैसे ही हो जाएगा, we cannot sail out. तो वो तो earliest time नहीं हुआ ना, वो तो last time हो गया. What is the last time when the vessel can sail out? Rising tide पे हमें last time मिलेगा. Did you get it, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right. अब बेटा मुझे एक बात बताओ,